Energy of projectile before collision Ki is equal to 1 upon m1 u1 square. Kinetic energy of projectile after collision means after collision, first projectile की kinetic energy kf equal to 1 upon to m1 v1 square. मीन्स फर्स्ट पार्टिकल टारगेट के साथ कोलिजन करता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है. ओके, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम अ प्रोजेक्टाइल टू अ टारगेट डेल्टा मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है डिक्रीज होता है वो होगा. तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इन द प्रोजेक्टाइल means delta k equal to ki minus kf, ki equal to 1 upon 2 m1 u1 square minus 1 upon 2 m1 u1 square, 1 upon 2 m1 common, u1 square minus v1 square. Now fractional decrease in a kinetic energy means partial decrease in a kinetic energy. So delta k by ki. Here delta k 1 upon 2 m1 u1 square minus v1 square by ki is equal to 1 upon 2 m1 u1 square. 1 by 2 m1 u1 square. 1 by 2 m1 cancel. Therefore u1 square minus v1 square by u1 square. u1 square by u1 square 1. v1 square by u1 square so minus v1 square by u1 square equals number 1. Last time we studied after collision both particle projectile and target की velocity क्या है. तो projectile की velocity मिली थी m1 minus m2 by m1 plus m2 u1 plus 2 m2 u2 upon m1 plus m2 और टारगेट की वेलोसिटी मिली थी m2 minus m1 upon m1 plus m2 into u2 plus 2 m1 u1 by m1 plus m2. Okay. V1 is the velocity of projectile after collision. V2 is the velocity of the target after collision. Now take a special case. If target is at rest initially, then we take U2 is equal to 0. जो हमारे पास फिगर थी, this is the projectile U1, this is the target. Now we take U2 is equal to 0. Okay, then take U2 equal to 0 means V1 is equal to this term is 0. Then V1 is equal to M1 minus M2 upon M1 plus M2 into V1. So V1 is equal to M1 minus M2 upon M1 plus M2 into V1. Okay, so now put this value here 1 minus V1 by U1. So U1 take in the left side, then V1 by U1 is equal to M1 minus M2 upon M1 plus M2. Now put this value 1 minus M1 minus M2 by M1 plus M2 square. Now calculate equation number 1. Now calculate delta K by K is equal to, here we write M1 plus M2 square minus M1 minus M2 square divided by M1 plus M2 square. Now here we write middle term is other term is cancelled. Middle term 2m1 m2 plus m1 m2 m1 m2 means here we write m1 square plus m2 square plus 2m1 m2. Here we write minus m1 square plus m2 square minus 2m1 m2. Divide by m1 plus m2 square, m1 plus m2 square. So here m1 square, m2 square cancel, minus minus plus 2m1 m2
is equal to 4 m1 m2 upon m1 plus m2 square. So delta k by k, here we write 4 m1 m2 upon m1 plus m2 square. Also we write this term in a minus, take negative. So here we take negative, so write 4 m1 plus m2. Means here we write delta k m1 plus m2 square is equal to here we write m1 minus m2 square plus 4 m1 m2. इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा. Here we write m1 minus m2 square plus 4 m1 m2. This is the fractional decrease kinetic energy of a projectile. Okay. Here we also find delta k by k is equal to 1 minus m1 minus m2 square upon m1 plus m2 square. Also change in a kinetic energy. We write all formula हमें याद रखनी है. Delta k by k is equal to 1 minus v1 by u1 all square. Notes. Greater the difference in masses, less will be transfer of kinetic energy and vice versa. Mass difference, greater the difference in the mass, तो mass difference कम होगा, तो kinetic energy transfer कम होगा. Okay. Second point, transfer of kinetic energy will be maximum. Okay, a term हम zero लेंगे, तो maximum kinetic energy transfer होगी when the difference in the masses is minimum. So means m1 minus m2 equal to 0 means target and projectile both का mass same होगा. तब this term is 0, 4m1 m2 divided by 4m1 m2. Here we write 1 is equal to 100%. Means a target है m1, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल टारगेट को दे देगा जब दोनों का मास सेम होगा तब. ओके, हमें याद रखना है. सो द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन हेड ऑन इलास्टिक collision when target is at rest is maximum when the masses of particles are equal, is the mass ratio is 1 and the transfer of kinetic energy is 100%. तो mass same होगा तब maximum kinetic energy transfer होगी. ओके, ये हमें याद रखना है. नेक्स्ट, if m2 is equal to nm1, then we write above equation, this equation. This equation, m2 is equal to nm1. We write this equation, m2 take nm1 for n m1 square by m1 plus nm1 square होगा. तो m1 square कॉमन, तो कैंसल डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में. तो हियर वी राइट 4 m1 m2 upon m1 plus m2 square. Here we write m2 is equal to nm1. So here nm1 square into 4 m1 square common cancel. So here we write 4n upon 1 plus n square. Now here retaining kinetic energy, ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी हमने देखी. तो ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी मिली थी डेल्टा के बाय के इज इक्वल टू 1 माइनस v1 बाय u1 स्क्वायर या माइनस
m1 minus m2 upon m1 plus m2 square. अब रिटेनिंग काइनेटिक एनर्जी, तो 1 माइनस काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ ट्रांसफर, तो इसको हमें 1 में से बात करनी है ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी को, तो 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर बाय प्रोजेक्टाइल, तो डेल्टा के बाय के रिटेनिंग इज इक्वल टू 1 माइनस m1 minus m2 upon m1 plus m2 square. So here we write m1 minus m2 upon m1 plus m2 square. तो सेकंड पार्टिकल को कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, इतनी, और रिटेनिंग 1 को कितनी रहती है, इतनी रहती है। ये दोनों फॉर्मूला याद रखनी है। ये इसके रिलेटेड एमसीक्यू नीट में और जी में दोनों में आ गए हैं। नेक्स्ट, वेलोसिटी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टेशनरी टारगेट आफ्टर हेड ऑन कोलिजन। तो हमने लिया था टारगेट का, हमें चाहिए यहाँ पर टारगेट की वेलोसिटी क्या होगी, टारगेट का मोमेंटम क्या होगा, टारगेट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ टारगेट आफ्टर कोलिजन, तो हमने लिया था v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2 m1 u1 upon m1 plus m2. Stationary target. So here we take u2 is equal to 0. u2 is equal to 0. Then v2 is equal to u2 0. तो ये टर्म ही रहेगा. तो 2 m1 u1 upon m1 plus m2. Now न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को m1 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 2u1 m1 by m1 1, m2 by m1 m2 by m1. Okay. Now we write here m2 by m1, we take n, then m2 by m1 equal to n. So v2 is equal to 2u1 upon 1 plus n, m2 by m1 is equal to n. This is the velocity of target after elastic collision. Second momentum, इसको m2 वर्ड मल्टीप्लाई कर, तो m2 momentum of target, so P2 is equal to m2 v2, means here we write m2 v2. Here we write m2 v2, तो v2 की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं, यहाँ पर v2 की वैल्यू, तो 2 m2 u1 upon 1 plus n. Okay, तो यहाँ पर here we take m2 equal to n m1, so p2 here we write p2 is equal to m2 2u1 upon 1 plus n. Now write m1 is equal m2 equal to n m1, here 2 n m1 u1 upon 1 plus n. Now p2 is equal to n word divide numerator or denominator. Okay, so here we write 2 m1 u1 divide n, so here 1 by n. Okay, so here 1 or here 1 by n, so p2 is in a form of m1 momentum. अब काइनेटिक एनर्जी, तो k2 is equal to 1 upon 2 m2 v2 square, 1 upon 2 m2 equal to n m1, v2 we take 2 u1 upon 1 plus n, 2 u1 upon 1 plus n square. Therefore 2 cancel, 2 square means 4, 2 cancel, तो यहाँ बाकी बचेगा 2, तो 2 m1 n u1 square upon 1 plus n square. Okay, this is the kinetic energy of the target after elastic collision, head-on collision. Now we take a relation between masses for maximum velocity, momentum, and kinetic energy. Okay, so here we write maximum velocity. So here v2 is equal to 2 u1 by 1 plus n. For v2 maximum means
एन मिनिमम, एन मस्ट बी मिनिमम। V2 तभी मैक्सिमम होगा डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। तो डिनोमिनेटर में 1 है और ए एन है, तो एन मिनिमम क्या है 0। तो एन इज इक्वल टू m2/m1 टेंस टू 0, मीन्स टेंस टू 0 कब मिलेगा, टेंस टू 0 तभी मिलेगा ए न्यूमेरिकल m2/m1 में m1 ज्यादा होगा m2 कम होगा, मीन्स m2 वेरी वेरी लेस देन m1। तो मीन्स टारगेट should be very light or projectile is very heavy, then velocity after the collision of target is maximum। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट, मोमेंटम P2 equal to 2m1u1 1 plus 1 by m। तो मोमेंटम मैक्सिमम करना है तो डिनोमिनेटर मिनिमम, डिनोमिनेटर मिनिमम करने के लिए n है वो मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो P2 to be maximum means 1 by n must be minimum, 1 by n minimum means n must be maximum। तो n equal to m2/m1 tends to infinity, means therefore m2 very very greater than m1। The target should be massive, there momentum of target is maximum। Kinetic energy maximum, तो K2 equal to 4k1n upon 1 minus n whole square plus 4n। तो मैक्सिमम करने के लिए ये हमें मिनिमम होना चाहिए। तो K2 to be maximum means 1 minus n square must be minimum। तो must be minimum, तो 1 minus n, here we take 0, means n equal to 1, means is equal to m2/m1, means m1 equal to m2 होगा, तब टारगेट की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो मीन्स ये सब कंडीशन हमें याद रखनी है। टारगेट एंड प्रोजेक्टाइल should be of equal mass, then kinetic energy of target after collision maximum। ये सब हमें याद रखना है, ये सब MCQ में आएगा। नेक्स्ट, हम इसके बेस पे सब n small ball each of mass m impinging elastically each second on a surface with velocity u, the force experienced by the surface will be। तो सरफेस कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ओके। तो पर सेकंड एन बॉल, ओके। तो हियर तो मींस यहाँ पर इंसिडेंट बॉल, इंसिडेंट वेलोसिटी यू, मास एम impinging elastically means after collision also its velocity u, this is the positive, this is the negative, means initial momentum is mu, final momentum is equal to minus mu। तो change in a momentum delta p equal to 2pf minus pi means minus 2 mu। okay, the mass, तो 1 बॉल मास m, तो कितना बॉल इंपाइनिंग होगा n बॉल। तो 1 का मोमेंटम इतना चेंज होता है, तो n का मोमेंटम कितना चेंज होगा। तो हियर वी राइट m इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू n एंड u, ओके। तो इतना मोमेंटम है वो पर सेकंड चेंज होगा। तो पर सेकंड तो फोर्स कितना लगेगा, तो m एंड u, 2m एंड u, ये हमें मिलेगा, ओके। याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, ओके। अब नेक्स्ट लेते हैं
Next, a particle. A particle of mass m moving with horizontal speed 6 meter per second. इसकी velocity 6 meter per second. If small m very greater than capital M, this is the target, this is the projectile. इसका mass इससे बहुत ज्यादा है. Then for one-dimensional elastic collision, the speed of lighter particle after collision will. तो हमें फॉर्मूला मालूम है. आफ्टर कोलिजन प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी v1 इज इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. Here टारगेट 6 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी और हियर गिवन इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड. नाउ m वेरी लेस देन कैपिटल M. तो यहाँ पर हम m1 0 लेंगे, यहाँ पर m1 0 लेंगे, यहाँ पर m1 0 लेंगे. m2 by m2 कैंसिल तो माइनस u1 एंड m2 कैंसिल 2u2. तो u1 राइट 6, u2 राइट 4, minus 6 plus 2 into 4, 8 minus 6 means 2 meter per second. Okay, तो ये हमें याद रखना है. The lighter particle will move in original direction with the speed of 2 meter per second. Next. A body of mass m moving with velocity v makes a head-on collision with another body of mass 2m, which is initially at rest. The loss of kinetic energy of the colliding body. Okay, तो कितनी kinetic energy loss होगी? तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा k by k is equal to 1 minus m1 minus m2 by m1 plus m2 square. Now put here the body of mass m. तो प्रोजेक्टाइल का मास m है तो m1 equal to we take m and target का मास है 2m तो m2 here we take 2m. तो m minus 2m, m plus 2m, m minus 2m minus m plus 2m, 3m, mm cancel, तो 1 by 3 square, तो 1 by 9. So here 1 minus 1 by 9k, so 8 by k, means loss of kinetic energy is 8 by 9 of its initial kinetic energy. Okay, तो ये हमें याद रखनी है सब फॉर्मूला. Next. 78. A ball of mass m moving with velocity v makes a head-on elastic collision with a ball of the same mass moving with velocity 2v. m mass है, उसकी velocity v है. Same mass m, उसकी velocity 2v. Taking the direction of v as a positive velocities of two ball after the collision. After collision velocity कितनी होगी? तो हमें मालूम है, फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं. तो इंटरचेंज दी वेलोसिटी, दोनों यहाँ पर वेलोसिटी इंटरचेंज करेंगे. A ball of mass m moving with velocity makes a head-on elastically with ball of the same mass moving with velocity 2v toward it. तो 2v इस डायरेक्शन में है और v इस डायरेक्शन. ए प्रोजेक्टाइल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, टारगेट टुवर्ड्स इट, तो टुवर्ड्स मींस उसकी तरफ चलता है. दिस इज द टारगेट, दिस इज द प्रोजेक्टाइल. तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 हियर वी टेक इन अ वेक्टर फॉर्म v I k, u2 equal to minus 2v I k. If mass is same, then one-dimensional elastic collision, velocity interchange after the collision means here we write v1 is equal to
minus 2vi cap and v2 is equal to vi cap. तो दोनों इंटरचेंज करेंगे अपनी वेलोसिटी. लास्ट टाइम हमने स्पेशल केस में पढ़ा था, तो ये हमें याद रखना है. तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी -2v और टारगेट की वेलोसिटी होगी v. ओके, तो ये याद रखना है. नेक्स्ट, consider the following statement. A. In an elastic collision of two billiard balls, the total kinetic energy is conserved during a short time of collision of the balls when they are in a contact. And reason? Energy spent against the friction does not follow the law of conservation of energy of this statement. So agent and reagent types. So here both A are true and R is correct explanation of it. Both A and R are true, but R is not correct explanation of it. A is true, but R is false. Both A and R are false. First here given, in an elastic collision of two billiard balls, total kinetic energy conserved during the short time of the collision of the ball. Okay, तो collision जब होगा तब kinetic energy नहीं, in a contact में होगी, तब kinetic energy converted in a potential energy. Kinetic energy is not conserved. So first A is false. Second, energy spent against the friction does not follow the law of conservation energy of this statement. Second भी false है. कोई भी प्रोसेस हो तो एनर्जी ऑलवेज कंजर्व लेनी है, तो हमें ये याद रखना है. तो ए एंड आर बोथ फॉल्स. आंसर इज डी. A smooth sphere of mass m moving with velocity u directly collide elastically with another sphere of mass m at rest. Now here this is the mass m. Its velocity is u. Another mass small m. So u1 is equal to u, and this is the rest, means u2 is equal to 0. After collision, their final velocity v and small v respectively, the value of v is find करना है. तो first final velocity of the target. तो after collision, this is the capital M. इसकी velocity v1. This is the small m. इसकी velocity v take v2. Okay. So now final velocity of target v2. तो m2 minus m1 upon m1 plus m2 u2 plus 2 m1 u1 upon m1 plus m2. Initially target is raised u2 take 0. Then v2 equal to 2 m1 u1 upon m1 plus m2. So now take m1 equal to capital M. M2 is equal to small m. So 2 mu upon m plus m. Now denominator or numerator both divide capital M. So 1 here m by m1, m by m. So here v2 equal to 2u upon 1 plus small m by capital M. The answer is here 2u upon 1 plus small m by capital M. Okay, तो ये हमें याद रखना है. Next, a sphere of mass 0.1 kg, m given, is attached to a cord of 1 meter length. Starting from height of its point of suspension, this sphere hit a block of same mass at rest on a frictionless table. If the impact is elastic, then
kinetic energy of the ball, okay, after collision. तो यहाँ से यहाँ तक आता है, इसकी वेलोसिटी दोनों का मास सेम है, ए है. आफ्टर फ्री फॉलिंग देन मोशन ऑफ बी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी बी की. तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर इज इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो हियर mgh. और यहाँ पर जब आएगा तब कन्वर्ट इन अ काइनेटिक एनर्जी, तो कन्वर्ट इन अ काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 mv². तो as two blocks are of same mass and the collision is perfectly elastic, therefore the velocity get interchange. Okay, means यहाँ पर b था तो वो स्टेबल था, तो ए कोलिजन इसके साथ होगा तब ए की वेलोसिटी 0 होगी और बी की वेलोसिटी जो ए की है वो इंटरचेंज होगी. तो मीन्स यहाँ पर इनिशियली बी था और यहाँ पर इनिशियली ए था. ए यहाँ पर इसके साथ कोलाइड होगा तो बी स्टेबल है, तो यहाँ पर ए आएगा तो उस ए की वेलोसिटी 0 होगी और बी की वेलोसिटी जो ए की थी यहाँ पर वो मिलेगी. ओके, तो ये हमें याद रखना है. द ब्लॉक ए कम इनटू रेस्ट एंड कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू ब्लॉक बी. तो कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी यहाँ पर, जितनी यहाँ तक पर पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी. तो काइनेटिक एनर्जी जो ब्लॉक ए बिफोर कोलिजन इज इक्वल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए एट द ओरिजिनल हाइट is equal to mgh. M is given here. M is given 0.1 and G is given 10 and H is given 1, means 1 जूल मिलेगी. ओके, तो याद रखना है. Okay, next 84. A ball moving horizontally with speed v. With speed v, strike the bob of a simple pendulum. Strike the bob of a simple pendulum at rest. So here, simple pendulum, this bob is rest, and this is the projectile. Its velocity is v. The mass of the bob is equal to that of the ball. दोनों का mass same है. If the collision is elastic, means in elastic collision, transfer its velocity. इसकी v velocity थी, तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v होगी. ए रेस्ट था तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी 0 होगी. ओके, याद रखना है. तो इफ द कोलिजन इज इलास्टिक द बॉब विल राइज टू हाइट. तो कितनी हाइट तक जाएगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो mm कैंसल, मींस h इज इक्वल टू v²/2g. नीट वाले को ऐसे क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट, मूविंग बॉडी with mass m1 strike a stationary body of mass m2. The masses m1 and m2 should be in the ratio m1/m2 so as to decrease the velocity of the first body 1.5 times, assuming a perfectly elastic impact. Then the ratio of m1/m2 is. तो now first body की velocity decrease होती है. Okay, 1.5 times. So here, after collision,
प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का फॉर्मूला v1 m1 minus m2 upon m1 plus m2 u1 plus 2m2 u2 upon m1 plus m2. Here second body is stationary, means u2 take 0, this term is 0, means m1 minus m2 upon m1 plus m2. But here v equal to u1 by 1.5. So here we take u1 is equal to 1.5. Okay. So sorry, v1 is equal to u1 by 1.5. u1 cancel. Then here we write m1 plus m2 is equal to 1.5 m1 minus m2. Okay. Means calculate m1 plus m2 is equal to